Hello everyone, I am Swati and welcome to another podcast by the iScale. And today in this podcast, we are having with us our very special guest, Shweta Shandilya ma'am, who is an executive director at IBM in AI and data. Ma'am, I am truly grateful to you on behalf of the whole iScale community, and it's a privilege for us to invite you as a special guest on the session. So thank you so much, ma'am, for joining us today. Thank you, Swati, for having me. It will be great talking to everybody here. And, I was, you know, looking forward to this discussion here. Ma'am, when our community came to know that you are coming on the platform, so we did a poll and we received so many questions that we are going to discuss with you in today's podcast. But the first thing, ma'am, would like to know is that right now you're in the executive position. In the last 21 years of rich experience, even more than 25 plus years of experience in the industry, I think you have seen so many technological changes and everything. And right now you are catering to so many freshers who will join the company, and you have seen all the stages. So ma'am, it will be great for us to know about your journey, how you have approached and how you have worked. So right now at that, you have reached at that point of position where you are taking the decisions and it is affecting so many people's life. Ma'am, it will be great if you share about your journey, your experience with us. Yeah, sure. Of course, as you said, like I started my journey in 1998, and it's been, a long journey now. It's almost been 26 plus years in the industry. Um, if, the one thing important is, then you'll see a lot of that, like we all talk about, right? Though I did my degree in civil engineering, I actually am working on the computer science part of it. So it is all based on the skill transition, that skill has become much more important than a degree. And that is what the last few years of changes have taught us, right? That the how you can skill yourself very quickly in the things that you interest you, in the things that you would like to grow yourself, is much more becoming more relevant and more important than actually a degree that you actually hold. And we are seeing more and more as we see this in this generation, right? So as I said, I started with a civil engineering degree, and I didn't want to work in civil engineering anymore. It was some sort of sector in India was booming. So I came to Bangalore, thinking about moving into computer science. And the first language, the language as a Java was just coming up at that point of time, and it provided a very good platform for people who were, not very, because of the IT boom. It provided a good platform for people from non-computer science or a background to get themselves skilled and work into get into computer science. And thankfully, there was a lot of opportunities at that times. And it was good. I wouldn't say it was very difficult. Like, as long as you had like the good skills and you would work a little hard, it was okay to get a job. But I think the intentions were there, right? The intentions are very important. The intent to, like, you will figure it out, right? The fact that you will figure it out is the most important part that a person should kind of think about, or what that opens a lot of areas of what you can do, right? So I think that was the most important thing, that at least I think that was important in my journey, because I am from Patna and I came to Bangalore, looking, trying to change my job profile and trying to get into something different. And then started working. And then when I joined my first job, within 3 months I was asked to go to London. So I was there for like 1.5 years, and then worked there. And then of course you get married, and then you come back, and all of that happens. And then you know uh, at some point, when I came back, I joined a smaller company, and I was doing product development for that company. We were a small group of people. And when that company got acquired by IBM, and the product that we were working on got acquired by IBM, and that's how I joined IBM. So after that, it's been just IBM, right? Even though there have been times and situations where I think that, like, maybe I should figure out something new. But every time, IBM has been very, very nice to, give new opportunities and things that really, really, give you, things, keep make you learn new things, new opportunities, make you drive
to do a lot more better, and to get and drive new products and new ideas and new things. And IBM has been some of the front runner on that. So I think the journey in IBM has been just wonderful. Last 21 years, like every 4 5 years, I've had something new and exciting to do. And because I was always in the data area and I was working on the data side, slowly transformed into things that we do around AI as well. We all know that AI is all about data, and data is what is most relevant in the AI, right? True. You you have the data as well. So, you naturally manifest yourself into things that you can do around AI with the data. And that's how the journey for last few years have been. So, whatever we have been working on the data side, we've been trying to manifest itself at how it can help, how AI can help us to do and manage the data better. To be able to, get deal with structured and unstructured data and all of that that is relevant for the industry as we go into the AI world. Yeah, that's really an amazing journey you are having, ma'am, from Patna to the prominent position and leading so many projects under your leadership. So it's really amazing. Ma'am, I'm having one question. As right now we understand the AI is now and AI will be the future. There are lots of technological changes are also going on in AI, and data is the fuel. It's like more than a currency in the AI related world. So ma'am, there are so many working professionals who are in a different domain. Like let's say somebody is working in a customer support, somebody is working in sales, and mostly they are from the non-tech domains. So right now, for those who are thinking to come in the AI related domain, is it the right time for them? And if yes, then what are the key skill set they need to work on so that they will have the chance to work in the industry? Yeah, so I mean, so from an AI perspective, one thing that we all understand is that AI will be very, very prominent part of our life going forward, right? So it will touch each and every aspect of our life. It to an extent that it will become completely invisible to us. You will touch a mobile, you will touch an instrument at home, you will touch a device at home, you will touch anything, and you will see AI behind it. So the prospects on how the AI will grow in the industry is huge, right? So and the thing that we all have to learn is it's not AI versus human. It's basically how do we work with AI? Like Yes. how do you work with AI, right? So people who are working in different sectors, like for example, even people who are working in customer support or people who are working in, I mean, I think what they all need to do is think about how they can improve their day-to-day stuff using the AI as a capability. Now, of course, the platforms are developed by very, very skilled people. Like, if you think about ChatGPT, the skilled people who are developing these Yes. models, who are developing these transformers, and that requires a specific skill. You should be able to train a model, domain specific models and all of that. But how do you use it is another sector of the users, right? Like I can use a chat gpt to make my life simpler. I can use chat gpt to make my work simpler. I can use chat gpt to do things that I am maybe taking 2 hours to do right now, but I can use it to make it much more simpler, so I can maybe learn different things. I can use that time to learn other things, right? So I think if people are working on customer support, if people are maybe doing things like product support, or if people are even anything else that that probably is a lot more, they feel that that's a lot of mundane work, repetitive work, and things that can be done a lot more, people definitely can start thinking about how they start living with AI, right? Yeah. Because it is definitely going to happen that a lot of mundane work will become more and more move towards these AI models and other things, right? Because they can do the job better, and human mind was always supposed to be more creative, be it anything, right? Yes. It could be in the area of IT, it could be the area in the art or anything else. um you know that is where the intention of the humans will go, and they will can focus more on that. Because one thing we got to remember is ai will AI learns only what we teach, and they will self learn it and learn it and learn it. Whatever human data or the data that is generated and available in the world is what AI is trained on. So unless and True. until we create more things that they can learn, their knowledge is what we know till now. They don't know what we'll know tomorrow.
and that is what human can think and add, right? So that's where we have to kind of think, how do we live with it, how do we use it, how do we make our life simpler so that we can think more and do much more important things of life, so that we prosper from that. So I mean, I think AI will definitely shape a lot of things, like I mean, I think we have just probably not even touched like 1 or 2% right now, True. and there is a whole field, and it's going to change very fast. We all believe that. It's no more going to be a Mission Impossible movie, whatever you've seen, it's going to happen pretty fast. So I Yeah. think better we start thinking about ourselves as to what we should specifically focus on and learn on and do all those things. I think it will be human mind will, I mean, it's a very creative mind. So I think we will find new opportunities of how we will, work with AI faster. Yeah, it's absolutely true, ma'am. It's not human versus AI, as you have mentioned. It's about the humans who are going to adapt AI and about the humans who are not going to adapt AI in their work and everything, so that the productivity will increase. So, ma'am, like as you said that AI, it's better to start early so that we can start implementing adapting AI, because technological things are going to change very fast, and the whole revolution is like in a very rapid range. So मैम, लाइक हाउ द कमिंग 3 years विल लुक लाइक, जो लोग अभी काम करते हैं, एज पर योर एक्सपीरियंस मैम, कि आने वाले 3 साल 5 साल जो AI में होंगे वो किस तरीके के होंगे, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डेवलपमेंट, क्या चीज़ें हमें और नई देखने के लिए मिलेगी इस सेक्टर में मैम? तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, जैसे कि मैं बता रही थी कि डे टू डे यू ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग सेल्फ ड्राइव कार्स, राइट? यस। Cars or quality of vehicles, how you're going to get it become the amount of traffic, the amount of stress that we go through in the car, you will see all of that. I think there will be a huge changes in the way that we operate. As a woman, I think about the way we have various things that we do in the kitchen, like the various the day to day stuff that we have to deal with. I think there'll be a lot of advancement that will come up. You already see that in countries where there is less population, human population, जैसे कि जापान है, फिनलैंड है, और ये सारे यस। देशों में people are using robots for their day-to-day stuff, for company, for people to talk to, for those types of things. So there'll be a lot of that will come very quickly. And I think इंडिया में अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें उतनी लोनलीनेस या वो सब चीज़ें, या अभी भी बहुत लोग हैं जो कि स्किल्ड लेबर का इशू है, तो वो सब चीज़ें अभी नहीं देख पर वो बहुत होगा, राइट? तो तो वो सारी चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि एआई जो है बिल्कुल हमारे लिए इनविजिबल चीजें हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम एआई यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली। ऑलरेडी हम जब फेस टाइम पे स्क्रॉल करते हैं या इंस्टा पे स्क्रॉल, सबके पीछे एआई चल रहा है, राइट? यस। क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप मतलब मॉडल्स देख रहे हैं, या वो एप्स देख रहे हैं कि आप किस पे यू नो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कौन सी वीडियो पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कौन सी आप टेड टॉक सुनते हो, कौन सी आप लिंक्डइन के किस टाइप के मैसेजेस को आप पढ़ते हो, सोशल मीडिया पे आप कहाँ ज्यादा ध्यान देते हो, तो उसके हिसाब से आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो पर्सनलाइज्ड हो जाता है, राइट? ट्रू। तो और यही नहीं कि मतलब फेसबुक पे आप करोगे तो समहाउ बिकॉज यू कनेक्टेड विद द सेम जी ईमेल आईडीज एंड फोन नंबर्स, आपका सारा सोशल मीडिया एकदम पर्सनलाइज्ड हो जाता है, जो यस। कि विद आता है आप पे। तो उस तरह से फिर आप अब ये भी चीज, जैसे आप क्या खरीदते हो क्या नहीं खरीदते हो, ये सारी चीजें भी एआई से इम्प्रोवाइज हो जाती हैं, राइट? तो आप अब अभी आप रियलाइज करो कि आपका सारा काम, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑन अ डे टू डे लाइफ, स्पेशली अराउंड योर buying or accessing things or even conversations, it's becoming more and more influenced by that, right? तो वो ऑलरेडी हो रहा है, जो कि हमको पता नहीं चलता कभी कभी, या बहुत लोग ऐसा सोचते नहीं है, पर एक्चुअली ये पीछे हो रहा है। और और सो एंड देन यू विल सी ऑल दिस अदर एडवांसमेंट, लाइक जैसे हम चीजें यूज करते हैं कि हम पढ़ाई के लिए भी, लाइक अभी बहुत सारे, जैसे हम लोग मतलब 20 साल 25 साल पहले की बात बोलें, तब जिस समय एजुकेशन जो था वो एज अ एक कॉलेज या स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जाके पढ़ना या समझना या कुछ भी। आई थिंक दैट विल चेंज सिग्निफिकेंटली, because as I said कि skill building will become the most important thing, more than important than the degree. And the fact कि हम ये सोचते थे कि पहले जो हम लोग छोटे शहर से आते हैं या विलेजेस से आते हैं, या वो बच्चे जिनके पास वो सारे मेजर्स नहीं है
काम करने मतलब इंफॉर्मेशन के, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, राइट? ऑल यू नीड इज़ अ स्मार्टफोन और छोटा सा लैपटॉप, कहीं से भी आप ले आओ, इजीली मिल जाता है आपके पास। अगर इंटरनेट इज सो इजीली एक्सेसिबल, एंड वंस दैट, ऑल यू नीड इज लैपटॉप एंड एन इंटरनेट एक्सेस. Once that is available, even a smartphone with an internet access is good enough to gain that same level of education that you will get from a very good institute True. in a bigger city, right? And then it is just your mind, just your imagination, just your skill, what you can do with that, right? So I think ये सारी चीजें बहुत फास्ट बदलेंगी, क्योंकि पहले हम ये सोचते थे ना कि अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है उसने तो डिग्री ली ही नहीं और उसने इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर दी थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द हमारे यहाँ, हमारे गांव में भी होने लगेगा, बिकॉज पीपल विल कम आउट, द शार्प एंड द स्मार्ट पीपल हु कैन थिंक by looking at things what is going on in the world. People will think, people will imagine, people will come out of ideas. और ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ भी होने लगेगा, जहाँ पे कि डिग्री से ज़्यादा रेलेवेंस जो है स्किल की हो जाएगी, और आप कितनी जल्दी कोई भी स्किल को लेते हो, सीखते हो, उसको आगे जो लेके जाते हो. और आई थिंक आवर आवर IT sector, I think, will do great. I think there's a lot of human talent, lot of young people coming in. They are looking at all of this. We need to, दो तीन चीजें हैं जो I think it's very very important कि um, um, आप कैसे अडाप्ट करते हो अपने आप को इन सब चीज़ों के साथ, और सीखते हो इन सब चीज़ों के बारे में, आप स्किल बिल्ड करते हो. दूसरा ये है कि आपका कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये सारी चीज़ें, ऑल्दो मुझे नए जनरेशन में ये बहुत बड़ा इशू नहीं दिखता, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद रेलेवेंस, राइट? आप Yes. अपने वो कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, कितने अच्छे से सोच पाते हो, कितने अच्छे से उस चीज़ों के, वो बहुत रेलेवेंट होता जाएगा, क्योंकि आपका अब it will become more and more important, right? True. And that what the new company, the current companies are also looking at, क्योंकि कोड लिखना और being able to do some of that will become commodity. Like there are a lot of tools now available जो कि 60-70% of the code लिख देते हैं, True. राइट? तो उसके लिए आपको कोडिंग आना चाहिए, मतलब आपका डेप्थ होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. पर आपको कोड करना हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. पर आपके पास Exactly. डीबग, आपके पास वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. तो पर आपके पास ये होना चाहिए कि आप जब प्रेजेंट कर रहे हो, जब आप चीज़ें के बारे में बता रहे हो, आपके पास वो डेप्थ होना चाहिए, आपके पास वो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए. ये सब चीज़ें बहुत रेलिवेंट हो जाती हैं, क्योंकि अब आप AI जनरेट कर रहा है कोड, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जनरेट क्या कर रहा है. True. अगर आपको वो, तो आप कैसे उसको यूज करोगे, राइट? तो द डेप्थ इज स्टिल रेलिवेंट ऑन द फील्ड दैट यू आर वर्किंग ऑन. Exactly. It's completely true, ma'am. Like whatever we are, code to AI generate kar dega, it's absolutely fine. But should we have the capability to understand that that is something that is truly important. Ma'am, there is one more question. Like ma'am, आपका 25 प्लस ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, आपने कितने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ हायरिंग्स ली होंगी, कितने लोगों को आपने मौका दिया होगा. और AI तो बदलता रहेगा, टेक्नोलॉजी चेंजेस होगी, लेकिन जब कोई एज अ रिक्रूटर या एज अ लीडर किसी एक टीम फॉर्म करता है और कोई फ्रेश टैलेंट को लेता है या वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेता है जो करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो मैम ऐसे बहुत सारे पैनल्स में आप रहे होंगे, आपने काफ़ी लोगों को हायर किया होगा. वो क्या ह्यूमन क्वालिटीज़ मैम एक रिक्रूटर देखता है किसी को भी हायर करने के पहले, ताकि जो भी कोई ये पॉडकास्ट देख रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, वो इन चीज़ों को अडाप्ट कर पाएँ. बिकॉज एट लास्ट आपका कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपके आइडियाज़ को, थॉट को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं. सो मैम, प्लीज़ हैव योर व्यूज़ ऑन दिस. So, as I said, like, when I go and interview a fresher, like, that तीन चार चीजें, it's very very important now, and it has changed in with time, right? पहले इतना Yeah. नहीं था. पहले जाके यही चेक करते थे कि जो भी फ्रेशर आ रहा है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है कि नहीं, उसको कोई लैंग्वेज आती है कि नहीं, मतलब जावा हो या C++ हो या पाइथन हो या फ्रंट एंड की कोई लैंग्वेज या बैक एंड की कोई लैंग्वेज, और ये सब कर सकता है कि नहीं. एंड थोड़ा बहुत डेवऑप्स टाइप की चीज़ें जो होती है ना, बिल्ड प्रोडक्ट Yes. एंड क्लाउड पे जाने के स्किल्स हैं, कैन ही टेक द प्रोडक्ट, specific skills.
पर अभी क्या हो गया है, टाइम इवॉल्व कर गया है, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमको आज की डेट में क्या होता है कि अगर मुझे एक यूआई बनानी भी है, प्रोडक्ट की यूआई बनानी है, आई कैन गिव इट एंड लॉट ऑफ दीज एप्स कैन जनरेट इट एंड आई कैन जस्ट चेंज अ लिटिल बिट एंड आई कैन यूज इट, राइट? Yes. तो क्या हो गया है कि अभी क्या हो गया है कि स्किल जो 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 काम, मतलब पहले मुझे याद है कि हम लोग एक यूआई बनाने के लिए एक एक हफ्ते लगाते थे एक पेज बनाने में, कि ये बटन को यहाँ से यहाँ करना है, उसमें भी टाइम लगता था। एक Yes. टेक्स्ट है, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसमें कितना एफर्ट लगता था, क्योंकि Yeah. हम आ रहे थे, हाथ से बनाते थे वो, कोडिंग सीख के बना के जो भी। अब वो काम जो है, वो पूरा का पूरा पेज जो है 2 घंटे में तैयार हो जाता है, राइट? सेम पेज, यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड एट ऑल। Yes. तो ये सब चीजें जो जो ह्यूमन एफर्ट जो लगता था, वो सब बहुत कम हो गई है। तो बेसिकली 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको डीबगिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी और का कोड समझ सकते हो कि नहीं, उसके लिए भी आपके लिए चैट जीपीटी या ऑल दीज टूल्स हेल्प। यू कैन पुट द कोड, यू कैन अंडरस्टैंड द कोड, दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कोड, दे कैन डू ऑल ऑफ दैट। तो द पॉइंट इज कि हाउ मच यू हैव स्किल्स। मतलब बेसिकली अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ, तो एप्लीकेशन में 4-5 चीजें होती हैं, राइट? आप कैसे उस एप्लीकेशन में लॉग इन करते हो, आप उसको कैसे क्लाउड पे ले जाते हो, आप उसको कैसे डिप्लॉय करते हो, आप उसको कैसे यूआई दिखता है, आप उस पे कैसे यूजर कैसे उससे इंटरेक्ट करता है, यूजर की फीडबैक आप कैसे कैप्चर करते हो। जैसे बहुत सारे, एक सिंपल ऐप बनाने का, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ सिंपल ऐप, लाइक बहुत सारी ये सब चीज़ होती है, राइट? तो जब आप ऐसे सिंपल ऐप बनाते हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, राइट? क्लाउड है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, यूजर इंटरेक्शंस है, यूआई है। तो इट हैज बिकम लाइक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड टू एंड। जिसमें आपका पहले था कि आप बोल देते थे कि मैं तो फ्रंट एंड यूआई हूँ, मैं तो बस यूआई, मैं तो मेरा मुझे पता नहीं कि तुम उसको पीछे क्या करते हो और डेटाबेस Exactly. में कैसे क्लाउड और वो सब नहीं। तो वो अभी क्या है ना कि वो थोड़ा वो मतलब जो डिफरेंशिएशन ऑफ स्किल्स जो थे पहले, वो थोड़ा कम होते जा रहा है। ऑफ कोर्स यू विल हैव स्पेशलाइजेशन, फ्रंट एंड, लाइक देयर आर पीपल हु आर क्रिएटिव, दे कैन डिजाइन ब्यूटीफुल यूआईज, राइट? They can be very creative about that. So those niche skills will always be there and we can't take away. But as an engineer, I think you will have to crisscross a little bit in terms of being able to understand, because the successful, I see the engineers who really grow fast are basically engineers who kind of understand the end-to-end picture, right? They're not very focused on very specific things. हाँ, मैं बैक एंड में ज्यादा स्मार्ट अच्छी हो सकती हूँ, मुझे फ्रंट एंड में काम करना नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा हो सकता है, बट यू स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? Exactly. So I think important key people will have those the a little bit of a broad but a little bit of the depth, and they should be able to understand end to end ki ho kya raha hai. That is very problem solving, debugging and all of that. I think adaptability and continuous learning becomes very important, क्योंकि आज java है, कल python है, परसों rust है, कल I am talking about, like, the language are evolving very fast, because as Exactly. the so you cannot just क्लोज योर सेल्फ से मैं तो सी प्लस प्लस ही करूंगी या मैं जावा ही करूंगी, मुझे नहीं आता, या मुझे टाइम लगेगा सीखने में, बिकॉज नाउ डेज कन्वर्टर्स आर देयर, लैंग्वेजेस आर देयर, यू राइट वन, यू कैन डू, सो ऑल दैट यू विल हैव टू टेक इट आउट ऑफ योर विंडो, that all that thing you have to take out of the window and go when you looking at it. So I really want people who, like, I you give me, I'll figure it out type of people. Basically, I'm looking for engineers who come, who I want to hire is, you tell me, I'll figure it out. Exactly. Tell me, right? And I'll figure it out, right? Because that's where it is. And I'll tell you, because I also interact with a lot of college students and engineering students who are in second year, third year. So and I see that attitude, like, जिस तरह के problems बच्चे solve कर रहे हैं आजकल, तो वो बहुत important हो गया है कि आई विल फिगर इट आउट, राइट? सो वो मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब ज़रूरी है, तो वही है चीज़ें, कि पहले क्या था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग पढ़ लेते थे, मे बी वो इंजीनियरिंग के लिए बने हो ना बने हो, वो एक अलग प्रॉब्लम था, पर वो इंजीनियरिंग पढ़ते थे क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो अब क्या है, वो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपका मन कर रहा है, अगर वो आपको लगता है कि आपको वो कर सकते हो, तो ही आप करो। अगर आपका इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा, आप कोडिंग करना नहीं जानते, आप कोडिंग नहीं सीख सकते, या आपको कोडिंग नहीं समझ में आता, तो आप मत करो, बिकॉज आप वो इंडस्ट्री विल बिकम, दे विल मेक यू इरेलीवेंट, True.
Okay, don't do it because somebody is telling you to do it. You do something because you like it. Today in world there's a lot of option. You Exactly. just want to do, right? जिसमें आपका मन लगे आप वो करो. अगर आपका कोडिंग और वो सब में मन नहीं लगता है तो मे बी आईटी इज नॉट द एरिया फॉर यू. मे बी यू शुड फिगर आउट समथिंग एल्स. क्योंकि धीरे धीरे इतनी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री हो जाएगी विद एआई हेल्प, राइट? सो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप स्ट्रगल करोगे, राइट? तो वो सब चीजें हैं. एंड देन ऑफ कोर्स यू नो क्या होगा कि एआई में ये सब चीजें भी बहुत रेलिवेंट हो जाएगी कि हाउ फेयरनेस और गवर्नेंस ऑफ एआई विल आल्सो बिकम वेरी वेरी रेलिवेंट, लाइक सो Exactly. दोस expand very very fast, that area of AI. So how much can you know work towards that area, that whatever you are developing and building is doing the right thing for the world or for the industry or for the sector that you're working for. So those areas will also adopt very very fast. एग्जैक्टली. एंड लाइक टू टेल ऑल आर कम्युनिटी कि जैसा मैम ने कहा कि अगर आप कोई काम को दिल से करोगे तो आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो श्वेता मैम खुद ही हैं, जिन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में सिविल बैकग्राउंड के होने के बावजूद उनका मन कोडिंग में था. शी डिड दैट एंड राइट नाउ शी इज़ एट अ लीडरशिप पोजीशन. एंड मैम देयर इज़ वन लास्ट क्वेश्चन. बहुत सारे वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं हमारी कम्युनिटी में कि यूजुअली जब लड़कियों की शादी हो जाती है और उन्हें रिलोकेट करना पड़ता है और वापस से अपने करियर को स्टार्ट करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनके करियर में करियर गैप क्रिएट होता है मैम. तो उसको लेके बहुत सारी लड़कियां वुमेन बहुत फिक्र करते हैं कि क्या हमें इंडस्ट्री अब एक्सेप्ट करेगी. हम हैविंग अ गैप ऑफ 2 years और लेट्स से 3 years ड्यू टू बेबी और ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस मैम. सो मैम आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑन दैट, क्योंकि आप इस पोजीशन में जहाँ पे आप कई सारे ऐसे वुमेन्स के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, उनको हायर करते होंगे. सो मैम व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? डू डी नीड टू वरी अबाउट फॉर दैट फैक्टर, या फिर मैम सिर्फ स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास उस लेवल के लिए स्किल्स है देन इंडस्ट्री इज़ रेडी टू हायर देम एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़? I think that is that that scare should not be there. एग्जैक्टली. Actually इंडस्ट्री में स्किल्स, एज आई सेड, कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम लोग तो मतलब कोई भी कितने साल का गैप ले लो, इट डजेंट मैटर. इफ यू हैव द स्किल्स, यू हैव डन थिंग्स, ठीक है. मे बी आई विल नॉट हायर यू एट यू नो if maybe you have, you know, you took a 5 year break, right? And you have come back, and you know initial experience was 5 years and you took a 5 year break, so basically your relevant experience is 5 years. So maybe I'll not hire you with a 10 year sort of an expectation perspective. I'll hire you with a 5 year expectation perspective. But I think even that is becoming slowly irrelevant, because you know, it doesn't matter to you whether you have a 20 year you know career or a 15 year career. What you bring to the table is what you get hired for, basically, एग्जैक्टली. right? So, you know, I mean, gone are the days where, you know, you thought, we used to think, right, कि अच्छा 4 साल हो गए तो, you know, गवर्नमेंट जॉब है तो 4 साल हो गए, फिर प्रमोशन हो जाएगा, फिर 4 साल में आप ये बन जाओगे, फिर 4 साल में आप ये बन जाओगे. बिकॉज प्राइवेट में ये सारी जॉब्स बिल्कुल, you know, it's just based on your skills anyway, right? एग्जैक्टली. And be a developer for 40 years and you can just be developing, which without, you know, becoming an architect, or without becoming executive, or without becoming any, because that's what your skill is. And developers are in a lot of demand and they earn a lot of money as well. Like they sometimes are, you know, a good technical developer who becomes a, you know, very good architect, and they earn a lot of money as well. So I think with time that part will become solely relevant. So even for, I think, women or anybody, abhi to men भी also take career breaks, right? And like, you know, I know, you know, I have a friend's son who took a career break for 2 years. Like he didn't want to do it. He took a break and came back. So taking a career break has become, you know, and with the new generation, we see it more and more, and it will happen more and more. So ultimately, this is all coming together, right? What you like to do, what you know want to do, you do that. If you want a break, take it, come back, because you will always be hired based on your skills. It will become more and more relevant right now. And this it has already become more relevant right now, because I think the AI and other things have taught. The other thing that we women used to struggle a lot was working from home. I know जब जब मैं ऑफिस में मतलब जब 15-20 साल पहले जब
उस समय लोग बहुत इस बात के लिए स्ट्रगल करते थे, राइट, कि अभी मुझे आई जस्ट हैड अ किड, आई कांट कम टू ऑफिस, कैन आई वर्क फ्रॉम होम, एंड देयर वाज लॉट ऑफ थिंग इन द organizations which would say no, 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 3 months over, come back to office, otherwise you figure it out and take a leave of absence or work no salary. Like there were all whole lot of discussions at that Yes. time, right? Has all become irrelevant, right? Because a lot of companies offer easy work from home. You can work from home as, again, do not misutilize it, because when work from home means that, you're there, but you have to figure out a support system around you to make that happen, make that work and all of that, because work is work. So I don't think that that is relevant. So I just strongly believe that this the new industry and the new way of working is very, very helpful for women, very helpful. So I think we should, we should be thankful for that. Exactly. And the whole thing is right now changing, and it's a good change and a positive change that is coming in people's life, whether it's a work from home because they are getting the opportunity to work as well as live with their family. So मैम, when I was in school, तो मेरे स्कूल में ना एक कोट लिखा होता था, अ लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, शोज़ द वे एंड गोज़ द वे. तो वो बात ना मुझे आज याद आ रही है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. You are the one, ma'am, जो इतना टाइम, because I understand you are in a leadership position, you are having many engagements, meetings, so many things, and today it's a weekend. I'd like to inform all our learners, it's a weekend, it's a Sunday in which we are recording this podcast with Shweta ma'am. And on that busy day, वो चाहती तो अपना समय किसी और चीज़ के लिए भी दे सकती थी, बट स्टिल दिस शोज़ द हम्बलनेस कि मैम अपने बिजी दिन में भी आप लोगों के लिए, इंडिया के जितने लर्नर्स हमारे थाई स्किल के साथ में, उनके लिए मैम ने टाइम निकाला और आपके लिए गाइड करने के लिए यहाँ पे मैम आए. सो मैम, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल वंस अगेन. थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए. एंड आई बिलीव दैट कि जो भी इस कॉन्वर्जेसन को देख रहा होगा, अगर उसकी लाइफ में छोटा सा भी पॉजिटिव चेंज आता है, तो ये श्वेता मैम और मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव कॉन्वर्जेसन रहेगा. सो थैंक यू वंस अगेन मैम फॉर ऑल योर टाइम, एंड इट्स अगेन अ वेरी मच प्लेजर फॉर अस टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, Swati, and thank you, iScale.